Okay, so today's topic is Eigen Values and Eigen Vectors. So we are going to basically see how to solve that Eigen Values and Eigen Vectors problem. Some of the questions are already listed over here. So we are going to select one of the question and we are going to solve it. So what is the first step or what is the first stage of that solving of that particular question? So it is, so suppose I'm selecting the second question. So the second question is A is equal to 221, 131, 122. The first task is that you find out the determinant. So what is determinant? Determinant of A is equal to 2 into 6 minus 2. I'm directly going to write, so 2 into 6 minus 2 minus 2 into 2 minus 1 plus 1 into 2 minus 3. So therefore, my determinant, so I need to calculate it. So 2 into 4 minus, so determinant is 5. Now the next part, characteristic equation. So in the last session मैंने बताया कि characteristic equation क्या होता है and उसके लिए मैंने एक shortcut का formula बताया. So we are going to use that formula. So here characteristic equation is given by determinant of a minus lambda I is equal to 0. So therefore now you find out determinant of a minus lambda I. So we can write this by the formula. So by formula, so what is my formula? It is lambda cube. So since it's a 3 by 3 matrix, so characteristic equation will be given by lambda cube minus sum of principal diagonal elements. This is what principal diagonal element. पूरा का पूरा चीज principal diagonal element. तीनों का addition. So sum of principal diagonal element मैंने symbolic form में लिखते हैं, हर बार लिखना. With this will make sure कि आप याद रखो sum of all the minors of the principal diagonal element. So it is m11 plus m22 plus m33 into lambda and minus determinant of a equal to 0. Okay, so after this, so therefore lambda cube minus the total is 2327 lambda square plus minor. तो फर्स्ट 2 के लिए माइनर कितना होगा? इट 3 इंटू 2 माइनस 2 कितना हो गया? 4. तो 4 प्लस, अभी 3 के लिए माइनर 2 इंटू 2 माइनस 1 3 और लास्ट 2 के लिए 6 माइनस 2 माइनस 5. कहां से आई ये 5? डिटर्मिनेंट. सो देयरफॉर दिस बिकम्स this is my equation number 1 and this is my characteristic equation. So the next task is to find out the root of the factor, that equation. The root कैसे find out करना है? Either use the calculator, scientific calculator, or by the synthetic division. So right now we don't have that scientific calculator with us. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रूट फाइंडिंग जाएंगे किससे? सिंथेटिक डिवीजन से. देखो बिफोर सिंथेटिक डिवीजन ऑल्सो हमें पता होना चाहिए सिंथेटिक डिवीजन क्या है? ट्रायल एंड एरर मेथड. इट्स अ ट्रायल एंड एरर मेथड. ओके, सो बिफोर गोइंग फॉर दैट ट्रायल एंड एरर मेथड, दैट इज मुझे पता होना चाहिए कौन से रूट्स यूज करने. सो हियर whether I will be using lambda equal to 1 2 3 4 5 6 whatever it is, माइनस में भी किया तो भी चलेगा. which factor I'm going to take? Okay, so a guess should be there. Okay, तो अगर मैं यहाँ पे lambda equal to 1 पुट करता हूँ, lambda equal to 1, the answer will be 0. करेक्ट? इक्वेशन देख लो, lambda equal to 1 पुट करके देखो, 0 आएगा. 1 cube 1 minus 7 plus 11 minus 5 equal to 0. Correct? So this is basically conceptual part. जब भी, कब? When all the coefficient, addition of all the coefficients are 0, addition of all the coefficients are 0, then lambda equal to 1 is one of the factors.
ठीक है, या लैम्डा माइनस वन इज वन ऑफ द फैक्टर। तो हियर मुझे इतना पता चल गया कि व्हाट इज सिंथेटिक डिवीजन। यहां पे मैं कोएफिशिएंट्स रखता हूं और यहां पे मेरा रूट वैल्यू, कॉपी दिस वैल्यू 1 इंटू वन। वन क्यों लिखा है यहां पे, बिकॉज वन इज माई रूट, मुझे पता चल गया दैट वॉज माई कंसेप्ट बेस्ड ऑन दी दैट पर्टिकुलर पार्ट। अब उसके बाद वन इंटू वन वन, तो माइनस सिक्स, वन इंटू माइनस सिक्स, वन इंटू फाइव, I got zero ना, means my remainder is zero, so therefore zero नहीं आता तो मुझे दूसरा कुछ वैल्यू लेके सॉल्व करना पड़ता। तो इक्वेशन क्या बनता है, लैम्डा माइनस वन इंटू, ये क्या है कोएफिशिएंट वन, एक फैक्टर निकल गया तो यहाँ पे क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस सिक्स लैम्डा प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। नाउ यू फैक्टराइज दिस वन, quadratic factorization is easy, so लैम्डा माइनस वन, इसके फैक्टर्स क्या है, फाइव का ऐसा फैक्टर जिसका एडिशन क्या हो माइनस सिक्स, तो फाइव का एक ही फैक्टर हो सकता, दो ही फैक्टर हो सकता है, वन इंटू फाइव या माइनस वन इंटू माइनस फाइव। तो यहां पे कौन सा बैठेगा, माइनस वन इंटू माइनस फाइव, तो सेलेक्ट दैट वन। सो हियर तो क्या बनेगा, so therefore lambda minus 1 into lambda minus 1 into lambda minus 5 equal to 0, so therefore lambda equal to 1 1 5, and what is this, this is the required, this is the or I can write, therefore eigen value of matrix is lambda equal to 1 1 5. Okay, so this is the part where we are finding the eigen value of a given matrix, so it is 1 1 5. So this is the first part of the solving the eigen value and the eigen vectors. So if it is a theoretical question, तो यहां तक वन मार्क्स से लेके दो मार्क्स तक हो सकता है, टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन है तो एक से दो मार्क का हो सकता है। अगर एमसीक्यू बेस्ड है तो आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना, उसके लिए एक एक मार्क के क्वेश्चन होंगे या दो दो मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं कुछ। इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी क्वेश्चन के लिए, डायगोनलाइजेशन हो या किसी भी चीज के लिए, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,